Okay, let me start the recording. And where is it? Recording in progress. So recording is going on, and what I am telling you is the boats that you see in the picture. The boats are here, but we want to move the boats a little upwards, because any which ways the top of the boat is covered with water. So the water is like, uh, in the background you have only water. The photo is taken from a height, so we can move these boats a little upwards so that we will have a little bit of ground for a better looking composition. Okay, so let's start the drawing. And let me do the drawing. So drawing, first of all, just position, put a point in the paper where you want the boat to end, and where you want the boat to start, and then depending upon that you just set the things. I'm not taking the boat too much upwards, okay, little bit, like just a little, थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ. And shape of the boats को थोड़ा सही बनाओ. Shape of the boat should be made properly. I think I like how I have positioned it. It is more or less the same of what I'm looking at. I want to put it here. Then what I will do is I'll have to take it a little forward. Take it a little forward. So I'll take it here. Okay. This is the boat number 1, and this is the boat number 2. Here there is a rock. Ground. So ये बोट के ऊपर यहाँ पे एक स्टूल है ना, that you don't need to make that stool. That is like not required for the composition. Like we can chuck it. Okay. We gotta get Jim, you and I on the phone, whoever needs to be on this. I'm setting it up right now. Who is in a We need to meeting? get Jim up to speed like ASAP, cause I didn't realize this thing's in 40 minutes. Yeah, it is. Okay, sure, so I would. It's just, typical. So Malati has joined, but she is not talking, which means she is not well, it seems. Yeah, Malati has joined. Either she is on mute or she is not well. Yeah, I'm not feeling too good today.
but you are not feeling bad also. Too good, not too good is okay. We can manage. Painting will make you feel better. Sir, I will have to drop. uh, Got an urgent call from office. So okay, that's okay. sorry about that. That's okay. That's okay. Yes, sir. I'll share the recording with you. Okay. Okay. So, guys, so I am trying to draw the two boats. Like I have, if you see, I have just shifted the boat little up, like 1 inch up, and then very fast I have tried to draw these two boats, and there is a piece of rock here, and rest everything is water. I have marked the area where the shadow or the reflection is falling. Shadow on the shadow is falling on the ground, and reflection is falling on the water. Okay. And then these this portion where the greenery is there, that I am not trying to draw at all. Okay. So just I'm marking the position of the banana leaf. Very vaguely I'm marking, see, like that, just very roughly. Okay, we don't need to be very particular here. Okay, this will be just a patch of color. More beauty we want over here. And by the way, I am using a simple cartridge paper today. I am not using any chitrapat or anything. So you guys use the chitrapat. My chitrapat stock is over. So uh, until unless I get the new stock of chitrapat, I am using the cartridge paper. But I'm sure it will, this picture is going to look good in any form of paper. So make the drawing, and let's get back and paint. So और एक बार बोलो कौन से कलर्स चाहिए. Once more repeat for me what all colors we need. Crimson, Uh-huh. yellow ochre, burnt sienna, Okay. ultramarine blue, and crimson. So crimson is already there. Yellow ochre, as you said, is needed. We also need some gamboge yellow, which will be used in the foliage for the trees. Foliage. Yeah. Recording in progress. And we need some burnt sienna for the darks here, and for the ground here, and for the boat body here. So let's start painting. Let me get some water. So as I said, I have a simple cartridge paper today, but we will do justice to this paper also. So for cartridge paper to work beautifully for watercolor, we have to wet it properly. Okay. And cartridge paper actually dries very quickly. Okay. For you, because you are using a chitrapat, it is simple. uh, it will flow down, the color will flow from top to bottom, so no need to worry. In my case, we'll have to wet it nicely. You also do it the same way. आपका क्या होगा, आपका ब्लेंडिंग अच्छा होगा मेरे से मेरे से ज़्यादा बेटर ब्लेंडिंग होगा. सो विल स्टार्ट विथ येलो ऑकर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ येलो ऑकर. पहले मैं येलो ऑकर डालूंगा. Right now I will not consider this portion foliage. I will first consider the background is the water. Okay. So considering the color of the water, and if we see water's the color of the water is very light, so that's why that will be the lightest tone. Okay. So now once we have put some yellow ochre, I will put some blue here. I will mix the blue color with the yellow ochre here, and because my paper is in an angle, so the color is going to flow down. Okay, color is going to flow down. Okay. Okay. So and we will let the color come down, and again we are going to use yellow ochre here.
Okay, यहाँ पे again we are going to use yellow ochre. See, because this is cartridge paper, what is happening is on this side it is started to dry already. It is started to dry. Okay, so that will happen, so we cannot do anything. So now we will take some blue color. Once it is wet, that time itself ये blue color में we will put some ripples. Okay, so ripples कैसे डालेंगे? ऐसे random डालेंगे ripples. Okay, so ripples जब डालेंगे तो क्या होगा? ये ripples ऊपर की तरफ जैसे ही जाएगा, ऊपर की तरफ वो नज़दीक आ जाएगा. It will come closer. The ripples will come closer. And जैसे ही ये इस तरफ है, we will not consider the shape of the boat or anything. We will just consider that everything is covered by water, and we will do it. Why is it so? Because boat is in the foreground, water is in the background. So हम लोग background बना रहे हैं अभी. Okay, so ये जैसे ये ऊपर जाएगा, ये और लाइट होगा. This blue color will become lighter, and they will come, the ripples will come closer to each other. और ये इन और क्लोजर. हाँ, फेंट भी होगा और क्लोजर भी होगा. ठीक है, लाइक दैट. हम लाइट करने को सिर्फ वाटर ज्यादा. हाँ, वाटर ऐड करना है, और कलर को आप निचोड़ लो हाथों से, ऐसे कलर को निचोड़ लो और फिर यूज करो. ओके, ठीक है. और जैसे ही ये नीचे आएगा, ये यहाँ पे बड़े बड़े रिपल्स बड़े बड़े आएंगे यहाँ पे. ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े, ये इसमें गैप ज़्यादा चाहिए इधर. हाँ, ओके. ये पहला स्टेज है. इतना करके हमको बंद करना है. एंड बिकॉज ये चित्रपट या कोई और पेपर होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे स्मूथली फ्लो करेगा. यहाँ पे थोड़ा से पैटर्न्स अलग आएंगे, क्योंकि ये कार्ट्रिज पेपर है, तो यहाँ का पैटर्न थोड़ा सा रिपल का पैटर्न अलग आएगा, लेकिन सुंदर दिखेगा, इतना आई एम श्योर. ओके, सो इतना करके इसको ड्राई कर दो, इतना करके रिवर्ट करो. ओके ओके, सो राइट नाउ व्हाट वी विल डू इज Recording in progress. just a minute. Right now we have already done the base color, and we have done the ripples of the water in the background. Okay, right now we will go a little darker on the boats. And in the boat, what is the lightest color that you are seeing? In the boat, what is the lightest color that you are seeing? Hello? Yellow ochre, sir. Yellow ochre, right? Yeah, yellow ochre is the lightest color that you are seeing. So we will use yellow ochre, and we will cover the entire boat with yellow ochre first of all, considering that yellow ochre is the lightest color in the boat. Okay, so if you see the color of the water that we did, that color of the water is very light as compared to the color on the boat. Okay, so that is why we need to recolor the boat now. So I am putting this color, this light yellow ochre kind of color. It is not very dark, it is light color on the boat. And then after we do this, we will again have to darken certain areas, which we will do in the later stages. First I am darkening the boat a little bit, slowly we will go. And if you see the area below the boat, that is also having a yellowish tinge, but not here, only in the shadow portion. Yes or no? ये बोट का जो शैडो एरिया है, that is also little like we Dark है. हाँ, dark है. And then as we come down, there is more of a brownish color. So I am mixing a bit of burnt sienna as we come down. I can add a little bit of burnt sienna, because
as we come down, there is less of yellow and more of brown color. Okay. Brown. On this portion, it's more of yellow color. Yellow, like on this portion, it is more of the greenish yellow color and green color. But green color का light color क्या है? Green color का light color है yellow. मतलब wherever there is greenery, what is the light color, light or the lightest tone in greenery? That is yellow color. So I am filling this portion with yellow. Okay, I'm filling this portion with yellow. So we are slowly going to the lightest color, and slowly we will build up our painting from the lightest color onwards. अभी मैंने lightest color डाला. So पहले हमने बनाया the water. Once the water is done, first layer is water, because water is the lightest color of all. After that, we went to these two boats, wherein we added some yellow ochre, and as we went down, it was the mud, which is slightly darker than, slightly darker. So we added little bit of burnt sienna, and on this side where the foliage and all the vegetation is there, in that portion also there is green color. But what is the lightest color amongst that green? That is yellow color. If you see all the green color, inside the green color you will see certain areas which are yellowish in nature. So that's why we are doing some yellow. Okay, that is the reason we are doing yellow right now. We will later on add more darkness, more greenness to it, but not right now, later on. So this is the second layer. Acha, this portion will also be covered with burnt sienna. Directly you take burnt sienna, and directly you take burnt sienna and yellow ochre mixture. You can put some yellow ochre at certain places. So never, like, we should avoid being very flat in color. Right now here also we are very flat, but we will be adding more layers. So this portion you can add a little darkness by adding some blues in this area, because इसको और directly on the burnt sienna. Directly on the burnt sienna, because we don't need to layer it so much, because there is no definition in this area. So this is just a patch of dark earth. Okay, so on top of the burnt sienna I am adding some blue, and I am trying to create a very dark patch. Okay, so this is done, and rest everything we will rework. So I will stop here, I'll let everything dry, and then I will add on the next coating. So we are done with the lightest color. After the lightest color, we are building a little darker color right now. This portion is over. This portion is the darkest color, which is done. Iska ho gaya. This much is left, which we will work now. Okay, so itna karo. Okay, sir. Recording in progress. Okay, so अभी हम लोग क्या करेंगे is we are going to darken this image even further. Okay, so where are we going to darken it? Inside of the boat, outside of the boat, wherever we find the darkness, we are going to darken. ठीक है, ये जो बोट है इसके अंदर में क्या कलर है बताओ? What is the color inside the boat and outside the boat also? Here this portion and this portion is very dark, right? What is the color that you see? What is the color that we can use? That is combination of blue and burnt sienna, sir. Okay, chalo, good. So we will go with blue, a little bit of burnt sienna, and we can add some crimson also. Okay, for that redness. Okay, for that extra redness, right? We can add some crimson also. If you see it in a PC,
in a machine, laptop, then you will see that this kind of color is coming. Okay, so what we will do is we will fill this with this color. इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करो, it should not be very very dark. Okay, and then we will leave a little bit of gap, like it will leave a little border, because there is a border there, you can see that, right? So वो border को छोड़ के, Yeah, right, sir. yeah, we will leave that border and then we'll cover the remaining portion like this. Okay, Okay. we will cover the remaining portion directly ऐसे. इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं, बट यू जस्ट सी दिस इमेज with half closed eyes and you just take the decision where it is supposed to be darker, just cover it. So you have to see the image with half closed eyes and take the decision. Okay, don't see with full open eyes. Okay, one more thing, now I'm going to darken this portion, and while darkening this portion also I'll leave a border. Understood? Yes, sir. And this portion is going Edge of the boat. edge of the boat, and this portion is going to be more darker than the interior, so try to mix a little darker color, less water wala color. Okay, and let's fill this. While filling, there is a piece of rock or stone here which we will avoid getting into, because that piece of stone is coming in the highlight. Okay, and then we will go around this other boat like that, and then if you see, suddenly there is some lightness here in this portion. Just see, you will realize it. Okay, Yes, sir. and then we will, Yes, sir. Water. yeah, water is there. And so similarly we have to now tackle this portion also, this boat. So you tell me what will be the dark colors of this boat in this area. What will be the dark color? That boat seems little lighter than the first one. Yeah, what color? Uh, burnt sienna. Okay, I'm taking burnt No, sienna. it's looking little yellowish. Yeah, so burnt sienna. What else? Yellow ochre will be used. Okay, yellow ochre, mixing yellow ochre. Blue and crimson. Yeah, blue and crimson. Okay, so you have understood how you are how to look the color. Okay, so now I will use this color. Okay, I will use this color, and so because it is looking little yellowish, we have used some yellow ochre. Yellow ochre. And now I am covering this entire boat with this color. Okay, and if we go below, if we go down, there is a reflection. So that reflection is looking more yellowish. Yes or no? So I am adding some, Yes, sir. yeah, I am adding some gamboge yellow to that. So to the same color what we have mixed, I am adding more yellow, more gamboge yellow. So it becomes a little greenish. Okay, and then I am using this color for the water reflection. Okay, getting it like that. Yeah, sir. Okay, That front part look is more yellowish. which front part? This one? Got reverse side reflection. This one or this one here? No, sir. That reflection of the boat Either here. is looking more yellowish. Let's add more that yellow. part. Let's add more yellow here. See, concentrated yellow डाल दिया इधर. Yes. Okay, so now, so that this is the way we see colors. Okay, so once this is done, Yeah. we are left with only one area, which is the inside of the boat. So tell me what color we should use inside of the boat here on this portion, on this face.
on this face, if you see, there is a color. So what will be the color? You have been accurate so far. So tell me if हाँ डिटेल्स No, not डिटेल्स detail. को अवॉइड करके ही बोलना हाँ, just details को avoid करके बोलना है. तो You येलो have to लग रहा है you have to see येलो occur and crimson yellow ochre and blue color. Okay, yellow ochre and blue, not crimson. There is crimson you can use. Okay, so yellow ochre and blue color. Okay, and little crimson can be used. Okay, little crimson I am using. See. Okay, so this is a darkish yellow color. Okay, and now I will do the same thing. I will leave a little bit of border. हाँ, एक border छोड़ के I'll start applying this color. थोड़ा सा एक border छोड़ के apply करो. Okay, and यहाँ पे जहाँ पे मेरे को डार्कनेस दिख रहा है वहाँ पे ये कलर मैं मारूंगा और जहाँ पे मुझे हाईलाइट है वो जगह पे छोड़ दूंगा. You getting me? yes sir So wherever it is darker than this light color, darker than the highlight, I am going to darken that, and wherever I see light colors, I'll leave it at that. Okay, now this portion is full of bamboo. So however this portion is little darker than this area, so I am going to cover this with a little wet color, like the same color but with lot of water. Just a little darkness is needed in this patch. lighter Little lighter color, yes. Okay, and yeah, this portion will be darker, which we will do later after some time. Acha, and one more thing, this portion also now ये यहाँ से थोड़ा मोटा हो गया, sorry थोड़ा मोटा हो गया. Let me quickly dry. Okay, so ये यहाँ पे ऐसे और ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसा, देखो यहाँ से. ओके, सो ये इतना अगर हमने कर दिया, सो हमारा मिड टोन्स का काम हो गया. एंड राइट नाउ वी कैन नाउ वर्क ऑन द डार्केस्ट टोन्स आफ्टर दिस, एंड more or less will be very close to the finishing of the painting. So what we did, we used the dark colors, which is blue, crimson, burnt sienna, blue, crimson and burnt sienna, all these colors for this. And then wherever, so I half closed my eyes, covered everything with this color, leaving a border, and then I stopped here. For this color I have used yellow ochre, more of yellow ochre, then yellow ochre, blue color and crimson color. Okay, and burnt sienna, all the four colors mixed together for this color. So, and while doing the reflection, I have used a little bit of gamboge yellow to the same color. ये पूरा होने के बाद inside of the boat में येलो ऑकर, लिटिल बिट ऑफ क्रिम्सन, लिटिल बिट ऑफ ब्लू मिक्स करके ये अंदर का हिस्सा को हमने अंदर के हिस्से को हमने बनाया. ओके, एंड देन इनसाइड वी कैन जस्ट पुट सम डॉट्स आल्सो लाइक दैट एज व्हाट यू सी. So just make sure that we are leaving a little bit of highlight over here. Like highlight means the what it's called, the edge of the boat. The light, the edge of the boat has to be left as it is. Okay, ठीक है, चलो let's do this much. Yes, sir. Yeah, Okay, and then sir. we will dry. So I think you are understanding Recording in progress. how slowly we are arriving at our destination. Okay, so you are getting it right slowly.
Yes, sir. Yeah. So now once this is done, we have to work on the finer small details. Okay. And first and foremost, if you see, the darkness out here is not constant. So you will notice that the bottom of this boat has some darkness, some more darkness to it. Can you see that? Can you just Yes, sir. Yes, sir. check? Yeah. Exactly under the boat. Exactly under the boat, yes. So exactly under the boat, what we will do is we will take some uh, crimson and blue combination. So it will be a nice violet color, and it will start from here. It will start from here and it will go like that. See, ये नीचे में डार्क है and ये ऐसे ऐसे जाएगा. Okay, and this darkness, there is some darkness here, and then mix it with a little bit of yellow ochre and try to fade it upwards. The upwards it will be faded little bit, थोड़ा सा ऊपर फेड हो जाएगा, but mostly आपका ये जो जगह है where it is touching the ground, that is going to be dark. Sorry. Yeah. Okay, so that is going to give it an anchorage to the ground. वो ग्राउंड को टच होके रह रहा है बोल के वो दिखेगा. एंड देन इफ यू सी here also there is some darkness on the just next to the next to where it touches. यहाँ पे थोड़ा darkness है, but ये ऊपर में लाइट है, बट यहाँ तक डार्क है. देखो ये नीचे तक, यहाँ तक डार्क है. ओके, तो छोटे छोटे जो सटल चेंजेस हैं, छोटे छोटे जो इसमें कलर की बारीकियां हैं, उसको हमको पकड़ना है, एंड वी विल फिनिश एवरीथिंग. सी, right now there is a shadow which is falling, and then there is this rock, so the shadow is going to fall like that. Okay, and इसको हम यहाँ से फेड कर देंगे. देन द सेम ब्लू एंड क्रिम्सन कलर जो था, यहाँ पे एक रॉक है ना, तो वो रॉक का इंटरनल जो फेस है, दैट विल बी दैट कलर, डार्क कलर. सेम ओवर हियर, ये वाला साइड डार्क हो जाएगा. सो थोड़ा सा येलो कर लेंगे, एंड देन वी विल वर्क ऑन दिस साइड. Like that. See, okay. So just we are giving shape to the rocks, giving shape to the other small things, and adding more darkness wherever it is required. If you see this supporting stick inside, there is a shadow on this part, and if you see this part also is a little darker. तो जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ डार्कनेस हम लोग बढ़ाएंगे. डार्कनेस का मतलब है ब्लू ऐड होगा, क्रिम्सन ऐड होगा. ओके, गेटिंग मी? Okay. Yeah. Yes, sir. Yeah. And then inside of this board there are some bamboos, and in between the bamboos there is this dark color, like गैप है. सो वो गैप को दिखाने के लिए आई एम जस्ट यूजिंग सम डॉटेड लाइंस. ओके, नो रॉकेट साइंस, ओनली डॉटेड लाइंस आई एम यूजिंग. ओके, कुछ इसमें कुछ महान कुछ नहीं है. यहाँ पे और थोड़ा डार्कनेस चाहिए, ये जगह पे. ये जगह पे थोड़ा डार्कनेस चाहिए, टच, एक टच ऑफ डार्कनेस at certain places पर टच ऑफ डार्कनेस से इफेक्ट आएगा इसमें. देखो ये जगह और भी डार्क होगा, ये वाला ब्लैंक. ये ब्लैंक और डार्क होगा, ये ब्लैंक और डार्क होगा. ये भी डॉटेड लाइन देखो,
ये यहाँ पे डॉटेड लाइन। सो ये क्या है ना, ये सारा ऑब्जर्वेशन का गेम है अभी, और जितना तुमको अभी छोटी छोटी चीज़ें दिखेंगी ना, उसको सिंप्लीफाई करके इसमें उतारना है अपने को, छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, और क्या है छोटी छोटी चीज़ें? अभी यहाँ पे ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पेबल्स और इस तरह के इफेक्ट्स हमको देने हैं, बिकॉज ये कोई मतलब ऐसा पॉलिश्ड एरिया तो है नहीं। सो इसमें क्या है ना, वी कैन स्प्लैटर सम कलर्स, वी कैन थ्रो सम कलर्स हियर। ये बहुत अच्छा दिखता है। देखो मैं बताता हूँ, जब मैं यहाँ पे स्प्लैटर करूँगा ना, ऑटोमेटिकली इसकी ब्यूटी बढ़ेगी। और ये सूखने के बाद और सुंदर दिखेगा। ये कलर स्प्लैटर करते हैं सर? हाँ, स्प्लैटर, कलर्स को स्प्लैटर कलर को स्प्लैटर करते हैं? हाँ, स्प्लैटर ही तो कर। वाटर ज्यादा लेना है क्या? हाँ, वाटर ज़्यादा नहीं लेने से स्प्लैटर कैसे होगा? वो भारी जब तक नहीं होगा, वो छोड़ेगा कैसे ब्रश को? स्प्लैटर कभी भी कम पानी में नहीं होगा। ओके ओके, तो ये हो गया। अभी ये जो बोट है, इसमें जो बैम्बूज है उसके ऊपर एक कपड़ा है, तो वी डोंट हैव टू मेक दैट क्लॉथ और एनीथिंग, दैट इज नॉट नीडेड। ओके, जस्ट वी विल मेक द बैम्बू का टेक्सचर। सो डॉटेड लाइंस, वेरी थिन लाइंस। सो थिन लाइंस के लिए क्या है, आपको कलर थोड़ा निकाल के, ये कपड़े में कलर को निकाल देना है, एंड देन यू जस्ट यूज द टिप ऑफ द ब्रश। हाथ को कंट्रोल करना है तो ऐसे ऐसे डबल हाथ भी रख सकते हो, कंट्रोल करके इसको जस्ट डॉटेड लाइंस बनाने हैं आपको, कहीं कहीं पे ब्रोकन, कहीं कहीं पे स्ट्रेट। तो ये ऐसा फील देगा जैसे ये बैम्बू है। बैम्बू या सरफेस बैम्बू का है? हाँ, बैम्बू या कोई भी एक, मतलब एक ब्रोकन जैसा कुछ, एक वुडन प्लैंक है वैसा दिखेगा। ओके, देन यहाँ पे ये जो जगह है, ये वाला हल्का डार्क है एज कम्पेयर टू द एज। ये हल्का डार्क है। देखो मैं इसको एक बहुत लाइट एक कलर से इसको कवर किया। सेम चीज़ इधर भी थोड़ा सा डार्कनेस देना। देखो हल्का एकदम पतला, क्योंकि मुझको जो ये जो एज है ना, एज को हाईलाइट करना है। एज ऐसा दिखना चाहिए जैसे जो एज है वो सबसे लाइटेस्ट है, उस पे लाइट सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो नीचे को थोड़ा डार्क करना पड़ेगा बस। सेम चीज़ इधर है। देखो एकदम लाइट कलर लिया, एकदम लाइट, और इधर डाला। आइडियली क्या होना था, इधर एक चीज़ गलती हुआ, ये जो ये वाला जो है, ये मिटा देना है। ये जगह पे प्लैंक है। हाँ, प्लैंक को छोड़ना नहीं है। और आउटसाइड साइड जो है, एक मिनट, बोतल के साइड, एक बोट का पेंट। हाँ, यू आर टेलिंग समथिंग, बोलिए। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था। ये बोट का एज है, हाँ, वो जो वाटर के साइड कुछ कर सकते हैं क्या? कौन सा वाटर के साइड? ये नहीं, ये बोट के जो एजेस है ना, जिसको हम वाइट छोड़ रहे हैं कंप्लीटली, हाँ, वाइट तो नहीं है, वो ये येलो वाटर कर के साथ मिक्स हो जा रहे हैं ना। वाटर, ये जो डार्केस्ट बोट है ना, डार्क वाला, ये वाटर के साथ मिक्स हो जा रहा है, मतलब ये वाला एरिया बोल रहे हो? बोट का दिस पोर्शन? नहीं सर, वो नहीं। बोट का जो ऊपर वाला जो हम एज जिसको ये हम वाला? कलर नहीं कर रहे हैं, हाँ, white हाँ, छोड़ रहे हैं, हाँ, वो, हाँ, रिवर के साइड है ना, रिवर के साइड। ओ हियर, हाँ, वहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। I don't think there is any problem, because if it is looking nice to the eyes, right now you are not seeing the picture, you are seeing only the recording from distance ना. So once I send you the picture, you will realize ये अच्छा दिख रहा है। Okay, मैं एकदम नज़दीक बैठा हूँ ना, so I can tell कि it is looking fine. Okay, समझिए, आपका प्रॉब्लम है कि
वो ये इसके साथ मिक्स हो गया है, इसमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, वो है आपका पॉइंट। ठीक है, अभी अभी अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें एक ये भी आ रहा है, इसमें एक डेप्थ भी आ रहा है, इसमें बहुत सिंपली मैं वो बताऊं तो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ we have made a nice boat. Okay, very simply, very in three easy steps we are trying to create the image of a boat. Okay, तो यहाँ पे कुछ प्लैंक्स ऐसे बना दिए, एंड इसके बाद थोड़ा सा बर्न सियाना और ब्लू कलर को मिक्स करके एक यहाँ पे एक ऐसा एक स्टिक बनाना है। तो जब ये स्टिक बनाते हैं ना, तो एक बोट का जान होता है ये स्टिक बनाने के बाद बोट कंप्लीट होता है एक्चुअली। आप कभी भी देखो, ये अगर ये स्टिक और ये रोप्स जो होते हैं ना, अभी मैं यहाँ से ऐसा एक रोप ले जाऊंगा नीचे की तरफ, देखो यहाँ से ऐसे एक रोप ले जाऊंगा ना, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हाँ, तो ये जो है ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे राइट नाउ जस्ट टू सजेस्ट दी शेप, हम लोग को यहाँ पे कुछ ऐसे लाइंस डालने हैं, सो दैट ऐसा लगे कि ये बेंड हो रहा है, मतलब जैसे ऊपर से ऐसे बेंड हो रहा है, वो दिखेगा, तो और शेप उसका डिफाइन होगा। ठीक है, इतना कर। सो ये अभी वॉट एवर वी हैव अचीव्ड राइट नाउ, वी जस्ट हैव टू डू दी foliage. So once this portion becomes darker, our focus, and we have to darken this thing a little bit and darken this thing a little bit, so that our focus comes here. ये डार्क हो जाएगा ना, तो फोकस इधर ही आएगा। देखो मैं बताता हूँ बना के। सो अभी इसको डार्क करने के लिए क्या है, मैंने मना किया था ग्रीन कलर यूज कर सकते हो, लेकिन what we can do is we can mix colors. In the meanwhile, like in this process, we will learn how to mix colors, how to be creative with colors. Okay, and while we are mixing colors, every time we pick some color, the consistency and everything is going to change. So that is why it's going to give more harmony, more nicer look. Okay, so I'm just using some darker colors. Okay, and I am going to leave a little bit of green here and there, थोड़ा सा येलो छोड़ देना है at certain places. So we are using ultramarine blue. I am using ultramarine blue. You can use cobalt blue or ultramarine, any blue will do. Okay, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस अपना फोकस इधर लाने के लिए है। सो इधर थोड़ा सा स्प्लैटर करेंगे कलर ऐसा, एंड देन कहीं कहीं पे यहाँ पे डर्ट है, सो यहाँ पे थोड़ा सा बर्न सियाना भी डालेंगे। Like this. थोड़ा सा ब्लू और क्रिम्सन मिक्स करके थोड़ा डार्क कलर बनता है, कहीं कहीं पे डार्क कलर्स थोड़ा थोड़ा एक ऐसा प्रोफाइल के लिए डालेंगे। And here this portion it will be dark green color, mostly bluish green color. इसको मैं पूरा पैच जैसा एक बना रहा हूँ, इसमें ज़्यादा नाटक नहीं कर रहा हूँ। एंड देन ये जो यहाँ पे बनाया उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इसमें हमको चाहिए ऐसा।
ठीक है, सो दैट ये थोड़ा पानी जैसा लगे। देखो, हाँ, समझ में आ रहा है? यस सर। जो ऊपर बनेगा वही नीचे बनेगा, थोड़ा एंगल में बनेगा बस। तो ये पानी का एक लुक एंड फील आ गया। एंड जैसे कि मैंने बताया, वी हैव टू डार्कन दिस पोर्शन अ लिटिल बिट मोर। ओके, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड कलर्स कम पानी के साथ ब्लू और क्रिम्सन को मिला के एक वेरी डार्क पर्पलिश काइंड ऑफ कलर इस जगह पे मैंने अप्लाई किया। यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस डाल रहा हूँ, थोड़ा सा डार्कनेस डालने से सही लगेगा। ये स्टोन को भी थोड़ा प्रोफाइल डाल रहा हूँ। ओके, बस यहाँ पे पत्थर वत्थर ये सब ऐसे थोड़ा बना के आई थिंक दी पेंटिंग इज डन। ये जगह में थोड़ा बस अपना वेजिटेशन को थोड़ा बढ़ा देना है एंड डन। ये पेंटिंग इज कंप्लीट। आई डोंट थिंक वी नीड एनीथिंग अदर देन दिस मच, नॉट नीडेड एट ऑल। यहाँ पे थोड़ा सा ये बनाना का ये थोड़ा सा अगर करना है, अगर इन केस थोड़ा सा इसको थोड़ा बर्न सियाना लेके ऐसे घिस दो, बर्न सियाना को लेके यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ये डाल देने से और एक बनाना का पेड़ का एक एलिमेंट इसमें आ जाएगा। आई थिंक दिस इज डन।